friends, welcome back. तो Trudeau Khalistan shocker. Who is Indian diplomat expelled by Canada over Nijjar's killing? तो चलो निजार या कि निज्जर? निज्जर। हाँ, सबका निजार निजार सुन के मेरे मुंह से भी अब निजार निकल रहा है। वो लोग निज्जर है। क्योंकि वो वेस्टर्न वो वर्ल्ड तो निजार ही अपनी बोलेंगे। लैंग्वेज के सब निज्जार कर रहे हैं क्योंकि JR जार है तो निज्जार कर रहे हैं मगर और हमारी इंडिया मीडिया भी वो सुन सुन के निजार निजार करी मगर जा जो रही है। पंजाबी है उसको पता है निज्जर निज्जर होता है। तो चलो देखते हैं कि भैया जो हमारे डिप्लोमेट जिनको वापस भेज रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, वो हैं कौन वहाँ। तो चलो शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Pawan Kumar Rai is a 1997 batch IPS officer of Punjab cadre. Pawan Kumar Rai knows insurgency, knows Khalistan insurgency. He also is a very fine officer and is an official designated for that particular post, which is an intelligence post in Canada. So what you have done is today is that you've exposed Pawan Kumar Rai, and he is now going to be the target of these fringe Khalistanis. For long, the one K word associated with India that dominated geopolitics and diplomacy had been Kashmir. India put an end to that when it revoked Article 370, putting an end to the special status of Jammu and Kashmir. That one act told the world that Kashmir was and remains an integral part of India. Now, Canadian Prime Minister Justin Trudeau is trying to put another K word on the global map, Khalistan. And he's doing it purely for selfish reasons, to appease a vote bank back home and to keep his minority government in power. I have with me Shishir Gupta, Executive Editor, Hindustan Times. Shishir, what explains this shocking announcement by Justin Trudeau? See, Justin Trudeau is following what the Pakistanis tried but could not achieve. They tried the K2 mission, which was basically Kashmir and Khalistan, and trying to create insurgencies within India. Justin Trudeau is now taken a step ahead by making these unsubstantiated allegations against the Indian agencies. And he says that there is a potential, he says there is an allegation. But where is the proof? Second thing, the Canadian government has expelled an Indian diplomat. इंटेलिजेंस का था वो। Now let me tell you something very interesting. They also named the Indian diplomat Pawan Kumar Rai. Pawan Kumar Rai is a 1997 batch IPS officer of Punjab cadre. Pawan Kumar Rai knows insurgency, knows Khalistan insurgency. He also is a very fine officer and is an official designated for that particular post, which is an intelligence post in Canada. Everybody knows who he is. Now it is for Justin Trudeau to come out with evidence and say that Pawan Kumar Rai told somebody to assassinate a terrorist called Hardeep Singh Nijjar. It's as simple as that. But I don't think so there is any evidence in that. So what you're doing is you're scoring political points within the Canadian Parliament for your own minority vote bank. And that is this minuscule Khalistan supporters based in Canada. Let me tell you very clearly, the Indian Sikh community is a most patriotic community. Only few days ago, rifleman Hardeep Singh lost his life trying to protect his own CEO, Manpreet Singh, in Kokarnag. So there is no questions on this on the community. But the point in this is, here is this minuscule lot, which are bunch of gangsters, bunch of drug runners, bunch of weapon smugglers who are trying to hijack this movement in Canada, and this man is out to support them. So tell us about this officer. Tell us some more about him, because it's very undiplomatic, to say the least, for a government, and that too of liberal. If it was Pakistan, one would understand. But this is a liberal, democratic government which is progressive, which espouses freedom of speech, espouses following of international law and diplomacy, and they are naming a diplomatic officer, a raw officer, no less. They are naming him in a parliament, and they are actually that's unprecedented as far as diplomacy is concerned, isn't it? See, the point in this is that
Pavan Kumar Rai was earlier the Joint Secretary in Ministry of External Affairs handling personnel. He is the man who was looking at their security profile. Pavan Kumar Rai is actually, everybody knows, he's occupying a post which is a designated raw post in Canada, just like Mr. Olivier Silvestres, who India expelled today, was occupying a post of a station chief representing the Canadian intelligence. But the point is that this is a very undiplomatic way to do it, because normally this is not done this way. So what you have done is today is that you've exposed Pavan Kumar Rai, and he is now going to be the target of these fringe Khalistanis, these illiterate people who are out to raise a movement where none exists. The Khalistan bogey, it's been raised in Canada, in Australia, in the United States, time and again. There is a Pakistan link to it. We all know it. It's a whole part of this entire mission to sort of sue insurgency in India. First of all, I'll address this question in two parts. One is that India has taken up this issue not only at the NSA level, at the PM level, at the foreign minister level, at the intelligence chief level. And in this, we have got sufficient, very good response from the US, now from UK, from Germany, and from Australia. Good. But here is this one government, Canadian government, which is quite unfazed about this Khalistani activity. Now, in the name of freedom of speech, they allow these tableaus to be moved around Ontario, where a Khalistani is shown to be killing former Prime Minister Indira Gandhi. वही जो मैं बता रही थी, मैंने They देखा openly display posters threatening to assassinate our ambassador, our consul generals, and they openly, today there is a video which is already out in Canada, where they are asking the Hindus to move out of Canada. Oh. What kind of liberal setup this is? I have the video, but there is no point in showing the video because these are lunatic fringe elements. But this is a Sikh for Justice video. What is the next move from the Indian government side? See, the Narendra Modi government is not going to back down in any way possible. And Mr. Justin Trudeau will soon realize how this is not going to really work. And it is not going to wash with either US, UK, Germany, Australia, or any other country. Because the fact is that Canada is right now promoting secessionism, promoting separatism in the garb of freedom of speech. Amazing. अच्छा मुझे ये बताओ कि he was a raw agent and did नहीं रॉ इंटेलिजेंस का ऑफिसर जो वहाँ पे था हर एक कंट्री में. अगर जब वो वहाँ पे गए हैं तो क्या सबको पता था कि वो किस पोस्ट पे एक्चुअली पोस्ट पे हैं? वो यही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से यही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हमने अपना रॉ का इंटेलिजेंस ऑफिसर रखा हुआ था, नोबडी न्यू हिज नेम, मतलब गवर्नमेंट ओनली नोज हिज नेम. कि हमने ये बोला है कि हमारा इंटेलिजेंस ऑफिसर है और एक गवर्नमेंट को पता है, बट पब्लिक को नहीं पता कि पब्लिक को पता नहीं है कि रॉ का कौन सा इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ काम कर रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है. एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, उनका कर रहा है. तो मगर तो हमें अगर पता है कि इनका कौन सा एजेंट है तो हम भी उसको वही करते हैं. तो यहाँ पे डिप्लोमेट को जो हायर पोजीशन पे उसको फायर किया है, और साथ में वो इनके भी एजेंसी से अगर कोई आया तो उसको भी निकाल. टिट फॉर टैट होता है, एक वहां जाएगा एक यहाँ जाएगा, ये तो नॉर्मल नहीं. पर वो अगर उसको सीक्रेटिव रखना था तो तुमने नाम क्यों ऐसे करके भेजा कि भाई तुम किसी और को क्यों नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि उसका नाम सीक्रेट था और नहीं बताना चाहिए. तुम एम्बेसी के किसी को जो था उसको बोलते जाने को तुमने इसको क्यों बोला? रॉ के एजेंट को तुमने जब बोला जाने को तो सबको पता चल गया. किसी इंसान को बोलने स्पेसिफिकली उन्होंने जो रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनको जो है एक्सपेल किया है एक मैसेज देने के लिए कि हमें पता है रॉ इन्वॉल्व था, समथिंग लाइक दैट. पर उनको ये नहीं दिखा कि भैया तुमने प्रूफ है नहीं और तुमने साथ में उस मगर देखिए रॉ एजेंट का जो है वो साफ सारी सबको पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि ही इज अ रॉ एजेंट. मतलब पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो है टिट फॉर टैट तो होता ही है. मगर ये थोड़ा शॉकिंग था कि जैसे ये कह रहे हैं कि आपने गलत इंसान को एक्सपेल किया है उसका नाम एक्सपोज करते हुए. आप वैसे ही एक्सपेल कर सकते थे मगर नाम देने की जरूरत नहीं थी. तो मेरे ख्याल से उन्होंने कनाडा ने जानबूझ के कुछ चीजें की हैं जिसका ऑब्वियसली उस पे वापस बैकफायर होगा, उस पे
रिपेल करेगा और इंडिया। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो की जो हमने वो अभी लेटेस्ट देखी थी ना, देखना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में थी, कुछ मिनट की इंटरव्यू कोई ले रहा था, पूछताछ कर रहा था कि तुमने ऐसे बोला है अपने संदन में और जो भी है। तो जब वो बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। कई बार कोई होता है ना कि भैया मेरे पास पूरा प्रूफ है, या और बात करने का ढंग बहुत सोच सोच के बोलने की कोशिश कर रहा था, घबराया भी हुआ, मुझे तो घबराया भी लग रहा था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से उसने ये एक्शन किया है और जिस तरह से स्टेप्स लिए बिना पूरे इन्वेस्टिगेट किए हुए, और उसके बाद हमारे रॉ एजेंट को एक्सपोज कर दिया है, ये बुरा फंसेंगे। देखिए कनाडा के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, मगर लोग उतने ही हैं जितने एनसीआर में हैं। ये तो कोशिश इतना करते थे, याद है कि किसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएं, स्टूडेंट्स आए, तो कितनी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया से स्टूडेंट्स आए, हम उनको ये फलाना कुछ देंगे, वो देंगे, हाँ इंसेंटिव्स देंगे। इनको तो चाहिए लोग। तो अगर आप देखें कनाडा में कोई 30-35 मिलियन लोग हैं, मतलब इट इज़ इक्वल टू हमारी एक बड़ी सिटी। आप मेट्रो ले लीजिए, एनसीआर ले लीजिए, उतनी जितनी पॉपुलेशन पूरे कनाडा की है। बिल्कुल। और इनको लगा होगा इनको बैकिंग मिलेगी बाकी कंट्रीज से, और मेरे ख्याल से अब सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि वो उनको बैकिंग भी उन कंट्री से वैसी नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो थोड़ा करेंगे इंडिया से। इंडिया अब इतना पावरफुल हो रहा है, ये वो पुराना इंडिया नहीं है, हम बता रहे हैं, तुम समझ लो। वो भी बौखला गए कि ये हुआ क्या है। उनको लगा था कि भैया जैसे पिछला इंडिया था पुराने जमाने का वैसी होगा, उनको ये नहीं पता था मोदी जी बैठे हैं। और पता है इस एक्शन से मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे इंडिया ने एक्शन लिया है, वो बैकफायर किया इनके ऊपर, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा मतलब मैं बैठी हुई मैं सोच रही हूँ कि हर एक इंडियन जो होगा वो और कॉन्फिडेंट हो गया है, उसको और प्राउड हो रहा है कि हमारी कंट्री का। मतलब ये है कि अगर आपको पता नहीं था रॉ क्या करता है, तो आपको अब नजर आ रहा है कि रॉ क्या करता है। कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।